Hello everyone, welcome to my YouTube channel AV Classes. So in this lecture we are going to discuss about the total internal reflections, what are the basic conditions behind it, what are the basic principle, and then further also we'll discuss about some examples like sparkling of diamonds and mirage formation. Okay, so in order to total internal reflection to be occur, the light has to travel from a denser medium to a rarer medium. And as we know, when a light travels from a denser medium to a rarer medium, the light get refracted away from the normal. So let us understand with the help of this diagram. See, this is a glass, this is the air. Now, this is the incident light which incident on this interface get refracted by angle R1. So apply here Snell's law. Then mu is equal to what? This is the 2, this is the 1. Then 2 mu 1 is what? Sine I1 upon sine R1. Now, if we increase this angle of incidence, then we will observe that the angle of refraction also increases. See, this is the first case in which the angle of incidence is I1. Now, we we allow the light rays to fall on this interface by angle I2, which is greater than I1. Then we will see that the angle of refraction get increases. Why? Because the refractive index has to be constant throughout this process, because glass will be same. Okay, so if this is constant and if we allow this angle of incidence to be increased, then the angle of refraction has to be increased in order to make this refractive index constant. So as we see, if we increase the angle of incidence, the angle of refraction also get increases. And if we increase this angle of incidence to a certain extent in such a way that the angle of refraction become 90 degree, then that angle of incidence is called critical angle. So this is IC is what we called critical angle. Critical angle. Now further, if we allow this angle of incidence to increase more than this critical angle, then this refracted ray become the reflected ray for this medium. Because why? Because again, if you increase this angle of incidence, the refracted ray get refracted by 90 degree in earlier case. So it has to be increase its angle of refraction in next case. So if the angle of incidence increases, this angle of refraction has to increase this one. See, initially this is the case, this case. So it has to increase by this much. So in that case, this angle, this refracted ray become the reflected ray. And this phenomena is known as total internal reflection. Why? Because this refracted ray totally reflected back in the same medium. Now, let's find out the relation between this refractive index and the critical angle. So, for this case, 2 mu 1 is what? Sine IC upon sine 90 degree. Okay. What is 2 mu 1? 1 upon 1 mu 2, which is equal to sine IC upon sine 90 is what? 1. This is what? This is the refractive index of this glass. Then 1 upon mu is what? Sine IC or sine or mu is equal to what? 1 upon sine IC. So this is the relation between this refractive index and the angle of critical angle. We can see that if refractive index is more, then the critical angle will become small. So that's all about it. Let's take an example of sparkling of diamond. Example, sparkling of diamond. See how diamond get sparkles. See, diamond had different faces, and these faces are cut in such a way that whenever the light incidents on these faces, they get totally reflected in the inside this diamond.
क्योंकि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम, अबाउट 24.4 डिग्री होता है शायद। तो होता क्या है कि जैसे ही लाइट, लेट सपोज दिस इज द फेसेस ऑफ डायमंड, जैसे ही लाइट इसके अंदर इंसिडेंट करती है किसी भी इंटरफेस पे, वो हमेशा ही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करती है। और हमें पता है कि जैसे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे लाइट इंसिडेंट करेगी किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो होता क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगेन ये रिफ्लेक्ट होगा, अगेन ये रिफ्लेक्ट होगा, अगेन ये। तो होता क्या है कि लाइट जो है इसी में ट्रैप आउट हो जाती है, और कुछ ही फेसेस जो है अलाउ करते हैं इस लाइट को बाहर निकलने के लिए। तो होता क्या है कि लाइट, मान लो कि करीब 10 लाइट की बीम जो है इसके अंदर फॉल हुई, और 2 ही बीम बाहर निकल रही है, तो जो बची हुई बीम है वो तो इसके अंदर ही रहेगी ना, लाइट की बीम। तो वो क्या करती है, डायमंड को, यू नो हम देखते हैं कि डायमंड जो है स्पार्क करता है। दूसरा जो होता है वो है मिरेज फॉर्मेशन। सेकेंड वन इज दी मिरेज फॉर्मेशन। मिरेज फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे ही आप एक डेजर्ट में या एक किसी भी हॉट एक्सटेंडेड सरफेस पे आप देखोगे कि हमें दूर से एक पॉन्ड दिखाई देगा वाटर का, ठीक है। उसमें हमें अलग अलग पेड़, ट्रीज के वो दिखाए, शैडोज दिखाई देंगे। तो एक्चुअली वो पॉन्ड होता नहीं है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। कैसे, सी, लेट्स सपोज दिस इज अ डेजर्ट, ठीक है। अब डेजर्ट क्या होता है कि जो इसका सरफेस होता है काफी गर्म होता है, जिसकी वजह से जो इसकी कंटेक्ट में जो एयर्स होती हैं वो ज्यादा गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो है एक रेयर मीडियम बन जाता है। और जो ऊपर के एयर होते हैं इस रीजन में, ये उतने गर्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये एक डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ से लाइट रेज एंटर करी, लाइट आई, इससे टकराई, और इधर की तरफ हमें मिली, ऐसे जा रही है लाइट, दिस इज द लाइट, नाउ दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेयर मीडियम। एंड वी नो कि जब लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तभी पॉसिबिलिटी होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो लाइट यहाँ पे आई, और हुआ क्या कि वो जो है कुछ इस एंगल पे फॉल होती है कि वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो, लेट सपोज ये हमारी आंखें हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में, ठीक है। अब हमारी आंख की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखने की। तो लाइट जो है, हमारी आंखें कहाँ देखेंगी इसके इमेज को, यहाँ पे कुछ। तो ये इस ट्री का इमेज हमें कहाँ देखने को मिला, यहाँ पे। तो एक बात बताओ, कभी भी हमें इमेज कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, या तो एक मिरर हो, या पॉन्ड ऑफ वाटर हो। तो इसलिए एक ये इल्यूजन हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे शायद वाटर है, तभी तो इसका इमेज हमें इसमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिरेज फॉर्मेशन, जो कि एक एग्जाम्पल या एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट जो है वो है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये भी एक एप्लीकेशन है किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसमें होता क्या है कि ये एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म होता है, जिसकी हेल्प से हम लाइट को किसी भी एंगल पे डेविएट करा सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम डेविएशन चाहते हैं 90 डिग्री का, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो 90 डिग्री का चाहते हैं, तो ये एक हमारा सपोज करो कि राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म हो गया, ये 90 डिग्री होगा, ये 45 और ये 45। तो होता क्या है कि अगर इफ यू वांट टू डेविएट द इंसिडेंट रे बाय 90 डिग्री, देन we allow the light to fall on this perpendicular surface, then this, it get totally reflected back, this get totally reflected back by 90 degree. This is the property of this prism. Now if we want to deviate the incident ray by 180 degree, then
we allow the light to fall on the hypotenuse surface of this prism. So this is like this. So the incident light, this is the incident beam and this is the reflected beam. So incident light and reflected light, the angle between this two will be 180 degree. Now if we allow the, now if we want that the incident ray does not deviate anymore, then we allow यहाँ पे no deviation. Then we allow this incident light to fall on this hypotenuse surface, but in this orientation. Okay, so this is like this, and this is like, okay, this is the incident beam, this is the refracted beam. So that's all about the total reflecting prism. Another example of total internal reflection is the optical fibers, which is used to transmit optical signals from one place to another. So that's all about the total internal reflections. एक बार और मैं बता दूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कब होता है, जब हमारा इंसिडेंट लाइट जो है वो रेयर मीडियम से, सॉरी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करता हो और वो जो है किसी इंटरफेस पे फॉल होता हो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे, तो वो जो रिफ्रेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है. ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कमेंट जरूर करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा देखने की कोशिश करिए. थैंक यू.